Hello friends, how are you? Fine? Well, after a long gap, I am going to upload this video with a poem, The Road Not Taken. This poem was written by Robert Frost, an American poet. Robert Frost is a well recognized poet of this world in the field of English literature. This poem, The Road Not Taken, is an autobiographical account of the poet, but he has been a successful one to universalize the content, the theme of this poem. The Road Not Taken, the title of this poem, shows a type of decision the poet wanted to have, but he didn't. Without wasting the time, let us proceed ahead with the text of this poem. Two roads diverged in a road, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Two roads diverge in a yellow wood. Yellow wood is the symbol of life. In fact, this poem deals with the story of the migration of Robert Frost from America, United States to London. Kavi, the poet, has passed almost half of his life. He was in his 40s when he decided to migrate himself from the United States to London. Yellowwood symbolizes his lifespan. He has almost passed half of his life. So he tells that he was on the junction of his life when he has to take one of his decision. One decision was to stay in the United States, and the other was to migrate himself with everything to London. कवि इस पोएम में अपने ज़िंदगी के एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जिसका वर्णन वो करना चाहते हैं, जिसमें उन्हें या तो एक रास्ता रहना था, चुनना था, जिसे उसे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में ही रहना था, या नहीं तो फिर वो माइग्रेट करते लंदन। उसी का वर्णन दिया हुआ कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। कभी जब आगे बढ़ रहा है अपनी ज़िंदगी में तो एक ऐसे दोराहे आता है पॉइंट जहाँ पर उसे एक रोड चुनना ही था। And sorry I could not travel both. The poet is in a position to opt only one way. He has no option for both of the roads. उन्हें या तो अमेरिका में ही रह जाना होगा या लंदन माइग्रेट करना था। तो इसलिए वो कहते हैं कि sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could. Being a traveler, because it was a decision upon the poet he has to take, and he has to think about the decision. So, be one traveler long I stood, looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. The poet thought about his first decision, the first road, what was better, whether he has to stay in America, in the United States, or go somewhere else. So he thought about his first decision to stay in America, in the United States. तो इसमें फर्स्ट स्टेंजा में कवि बता रहा है कि उसकी ज़िंदगी का करीब करीब आधा लाइफ स्पेन पार कर चुका है और वह कोई एक रास्ता चुनना चाहता है। इसलिए उसने एक रास्ते को चुना, सोचा, पहले यह सोचा, बीइंग वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, वह पहले रास्ते को सोच रहा है कि क्या वह अमेरिका में ही रहना चाहता है, वहाँ पर उसे कैसे ज़िंदगी जीना है, और उसके ही थॉट ऑफ द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ रिजाइडिंग इन अमेरिका, वो अमेरिका में रहने से उसे क्या लाभ और हानि होगी, उसके बारे में वो सोचा। इन सेकेंड स्टेंजा, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them about the same. Then took the other. The poet now decided, thought of the other way. That means other way was to migrate from the United States to London. So he took stands for thought, the other way, just as fair as, and having perhaps the better claim. The second road appeared to the poet to be the better one. The second road appeared to be very beautiful to look at, because it was grassy and wanted wear. It was grassy and wanted wear means no more travelers had
pass through that road. इसका मतलब यह हुआ कि दूसरा रास्ता देखने में तो बहुत सुंदर था, कभी उस पर जाना चाहता था, उसके बारे में सोचा तो दिखाई दिया कि वह रास्ता बहुत ही अच्छा है, लेकिन उस पर घास जमी हुई है, वह और चलने के योग्य था उसमें। वांटेड हुयर मीन्स हुआ कि वो उस रास्ते से बहुत अधिक राही नहीं चला। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड warned them really about the same. If many travelers would have passed by that road, then there would not have been grasses, there would not have been leaves there. So the poet wants to tell in the second line, in the second stanza, that the second road was very beautiful to look at, but many travelers had passed through that road. It means the second road was dangerous, risky. हिंदी में हम कह सकते हैं कि यह जो दूसरा रास्ता था वह डेंजरस था, क्योंकि अगर कभी अमेरिका से सीधे लंदन जाकर वहाँ रहने लगता तो फिर वहाँ पर एक रिस्की था, हो सकता था कि उनकी लाइफ कंप्लीटली स्पॉइल्ड हो जाए, और इस तरह के डिसीजन बहुत अधिक नहीं लिए जाते हैं। इसलिए दूसरा रास्ता जो था वो ग्रासी था और उस पर कम यात्री पास हुए थे। Now let us proceed with the third stanza. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oof, I kept the first one another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay. Now this time comes before the poet to take his final decision. And both that morning equally lay. Now when the poet has to take the decision, then the both roads were present before him. In lips no step had trodden black. कभी देखता है जब अगले दिन सुबह में कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है, तो देखता है कि एक रोड ऐसा है जहाँ से कोई स्टेप नहीं गया है, मतलब ट्रैवलर नहीं गया है, वहाँ पर पत्तियाँ बिखरी हुई है जंगल में। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. ओह इज एन interjection and it shows disappointment. I kept the first for another day. कभी अफसोस प्रकट कर रहा है. The poet now is regretting that he has chosen the second way to move from United States to London. इसलिए कभी कह रहा है यहाँ पर I kept the first for another day. पहला रास्ता को उसने सोचा कि अगले दिन उसे तय करूँगा, आज यह रास्ता से दूसरा रास्ता मैं यहाँ से जाता हूँ, मतलब कि वह सोचा कि लंदन पहले चले जाता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा अमेरिका की बात. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. The poet knew it very well that he would perhaps never come back to on the first road he opted, or which was very easy. कभी यह जानता था कि दूसरा निर्णय लेने के बाद उसे पहले निर्णय पर आना बहुत ही कठिन था और शायद नहीं आ सकता था. Now, final one. I shall be telling this with a sigh. Somewhere edges and edges hence, two roads diverge in a yellow wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. यहाँ पर final बता रहा है in this final stanza, the poet says, I shall be telling this with a sigh. Sigh is a deep breath. It is type of repentance. The poet is in fact not satisfied, though poet got success by opting the second way, by choosing the second way in his life. Yet the poet says that I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Ages and ages means युग तक. कभी कह रहा है कि मैं इन अपने डिसीजन के बारे में, अपने निर्णय के बारे में युगों तक, आने वाले पीढ़ियों तक मैं इन चीज़ों को कहता रहूँगा. क्या? टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई डैश. कहता है कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा भी पल आया जो दो निर्णय में से एक निर्णय उन्हें लेना था, और मैं देयर इज डैश आफ्टर आई. इट मीन्स द पोएट took the second way, opted the second way in his life. I took the one less traveled by, and that has made all the difference. The poet has opted the less traveled by. It means it was a risky one, it was a dangerous one. The poet has taken the decision. But
Concludingly, it is also a fact that the poet has taken the decision and it made him a recognized poet in this world. So I took the one less traveled by and that has made all the difference. कवि कहता है कि मैंने दूसरा रास्ता को चुना जिस पर बहुत कम आदमी गए थे और इस तरह से उसके ज़िंदगी में एक दूसरा निर्णय हुआ, एक दूसरी रास्ता, एक दूसरी परिणाम आया. तो इन दिस वे फ्रेंड्स वी हैव फिनिश दिस पोएम. यह पोएम जो था ऑटोबायोग्राफिकल था, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें थी, लेकिन यह सच्चाई है कि आदमी की ज़िंदगी में दो रास्ते आते हैं कभी कभी जिनको एक चुनना ही पड़ता है. तो कवि ने इस तरह से अपनी ज़िंदगी को वर्णन करते हुए एक यूनिवर्सलाइज, सभी की ज़िंदगी में एक यूनिवर्सल रूट पैदा कर दिया, एक यूनिवर्सल फैक्ट दिखा दिया यहाँ पर. और इसमें जो कुछ और पॉइंट्स हैं हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा. राइम स्कीम देखिए, फर्स्ट स्टेंजा में राइम स्कीम इसके साउंड से जुड़ी हुई है. वुड, बोथ, स्टूड, कुड, ओवर अंडर ग्रोथ. तो वुड को, इसका जो राइम स्कीम है, वुड को अगर हम ए मानते हैं तो बोथ को बी मानना होगा. वुड का साउंड स्टूड से मिल रहा है और कुड से मिल रहा है, जबकि बोथ का ग्रोथ से मिल रहा है. तो इसका जो राइम स्कीम होगा ए बी ए बी होगा. लेट्स फ्रेंड, if you are benefited or if think it was beneficial, please like, share and subscribe my channel. Thank you, thank you, thank you.